In today's newspaper, we will discuss about India ranks 135 in the gender gap index. So, दूसरा पढ़िए कोई. Please read someone with no background noise. Shahana, Nasreen, Azim. Please read. Sir, India ranks 135 among a total of 146 countries in the Global Gender Gap Index 2022, released by the World Economic Forum on Wednesday. The country is the worst performer in the world in the health and survival sub-index, in which it is ranked 146. It is ranked 146. Now yesterday कल अपन करे थे. Yesterday we have seen our in the editorial analysis. We want jobs plus we want lot of jobs plus India is railing behind many of the countries in the health and sanitation. Yesterday we have learnt it. याद है कल का editorial analysis? Yes, remember sir. the editorial analysis. So you have to connect like this. So ये लिख लीजिए. Please make your notes. India ranked 135 in the gender gap index, released by World Economic Forum. Yes, कितने पूरे कितने countries है? 146 countries. 46. ठीक है. We will read the continuation of this on page 8. Sir, India rank 136. 136 से कितना है? We'll go on. Yes, sir. 135. 135. 130 out of 146. 146 countries. Yes. Yes, sir. Page number 8. We'll come to this part. Okay, this is very important. India ranks 135 in the this part. By Economic Forum Index. India rank 135 gender gap index in the. So India का rank क्या है 2022 में? 135. So please read this part. Please read this. India ranked 135 in gender parity out of 146 countries, according to the Global Gender Gap Report 2022, released by the World Economic Forum. A look at India's ranking in the 4 sub-indexes based on which the overall ranking was determined. क्या सब इंडेक्सेस क्या है? क्वेश्चंस आजकल सब इंडेक्स पे भी आ रहे. The questions are coming on सब इंडेक्सेस. ये पैरामीटर्स है. ठीक है. कौन से पैरामीटर्स है? व्हाट आर दोस सब इंडेक्सेस? Global Gender Gap Index, Economic Participation and Opportunities. Global Gender Gap Index तो क्या है? पूरा टोटल है. It's an average result. But उसके 4 सब इंडेक्सेस है. ये याद रखिए. Economic Participation and Opportunity. Yes, sir. Economic Participation and Opportunity. Next. Educational attainment. Educational attainment. उसके बाद Health and survival. उसके बाद Political empowerment. So please remember ये 4 पैरामीटर्स है. 4 this thing. Global Gender Gap Index. It is given by which organization? World Economic Forum Index. World Economic Forum. Forum Index. Index किधर से आ गया? It is given World by Economic Forum. Okay. World Economic Forum. ये साल की रिपोर्ट है. Global Gender Gap Report 2022. इंडिया का रैंक क्या है? 135 Out of 145 146 146 countries. So please पढ़िए. The Global Gender Report 2022, which includes the index, says it will now take 132 years to reach gender parity, with the gap reducing on only by 4 years since 2021, and the gender gap closed by 68.1%
but this does not compensate for the generational loss between 2022 and 2021, as the trend leading up to 2020 showed that the gender gap was set to close within 100 years. So what? South Asia will take longest to reach gender Longest parity, will which take the is longest reach. longest. Asia will take the longest to reach gender parity, which is estimated to be likely in 197 years. India ranks poorly among its neighbors and it's behind Bangladesh 71, Nepal 96, Sri Lanka 110, Maldives 117, and Bhutan 126, only Iran 143, Pakistan 145, Afghanistan 146. Performance was worse than India in. India in South Asia. तो अपन कौन से कैटेगरीज में आ गए? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के कैटेगरी में आके खड़े हो गए. नेक्स्ट. Yes. तीसरी. In 2021, India ranked 140 out of a total of 156 countries on the index. The Global Gender Gap Index bench marks gender parity across 4 key dimensions or sub-indices: economic participation and opportunity, educational attainment, health and survival, and political empowerment. It measures scores on a 0 to 100 scale, which can be interpreted as the distance covered toward parity or the percentage of the gender gap that has been closed. India ranks 146 in health and survival, 143 in economic participation and opportunity, 107 in educational attainment, and 48 in the political empowerment. And 48 in the political empowerment. So last year क्या था? आज ये साल कितने कंट्रीज है? 135 out of 146. 146. 46. लास्ट ईयर का आप अगर कंपेयर कर लो, तो लास्ट ईयर 2021 में 156 कंट्रीज थे. लास्ट ईयर 156 कंट्रीज थे, रैंक था 140. This year we have 146 countries and the rank is 135. Whether there is improvement? No, sir. Or whether we have gone down? Gone down. We have gone down. So gender parity माने मेल एंड फीमेल के बीच में जो गैप है ना, उसको बोलते हैं जेंडर गैप. माने कितने फैसिलिटीज मिल रहे, ये पूरा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितना है, मेल का कितना है और क्या बोलते हैं फीमेल का कितना है. फीमेल. ठीक है, दिस इज द थिंग. समझ में आ गया? तो याद है, प्लीज राइट इट डाउन इन योर नोट्स. ये कैसा भी देयर इज अ ample chance that you will come, it will come in your exam. ठीक है? Yes, sir. So how many of you have taken the 2 doses of vaccination? Me, sir. Yes, sir. How many months have been completed? It's almost 6 months, sir. So once your 6 months are completed, you have to take up the booster dose. Booster. Precaution shots free from tomorrow. It's starting from tomorrow. India's cumulative and this thing, everything. From April 10th, Okay, sir. began administering the precaution dose of COVID-19 vaccine. National Technical Advisory Group of ये note कर लीजिए please. Please note it down. NTA-GI. They will ask in exam full form. What is NTA-GI? It is a National Technical Advisory Group on Immunization. ठीक है?
ये नया the government started this program. The government launched the second round of हर घर दस्तक campaign on June 1. So you might get a question. हर घर दस्तक campaign is related to what? Related to health, related to COVID, related to education, related to none of the above will. The government launched Related to COVID, sir. related to COVID-19 vaccination. Related to COVID-19 vaccination will क्या होता है, ठीक है? You have to remember like this. Enter. ये क्या है? COVID vaccines from 9 to 6 months after the recommendation of national test. पहले क्या था? 9 months था. अब क्या है? The center recently reduced the gap between second and precautionary doses, the COVID, from 9 to 6 months after the advisory of NTA GI. तो जिसका इसका 6 महीने हो गए, please make sure that you are getting a precautionary dose. It will take it like cold. It is the COVID like is cold. Every year it will come and it will go. But you have to be immunized first. You have to be immunized. Please do not say कि भाई COVID नहीं है बोल. Are there any people in our class who says COVID नहीं है? कोई है क्या अपने क्लास में आज? COVID नहीं है बोल. No, sir. ठीक है. Okay. So let us read the demographic dividend. देखिए थोड़ी चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं डायरेक्टली न्यूज़पेपर से करा रहा हूँ आपको. ये आप लोग you have to what you can say. So please read demographic dividend क्या है? Then I'll explain this. Please read. Someone In please the read. next, Someone please. पढ़े ना जी. Hasia, Asma, Amer. I want everyone's participation. If there is no background voice, please read. Diminishing demographic dividend. What In is the next 18. what is demographic Diminishing, dividend? decreasing. Okay, ठीक है पूरा पढ़ लीजिए. Then I'll explain. In the next 80 years, India's demographic structure is expected to, with the share of the working population declining and the share of dependent residents increasing. By 2037, the share of Indians aged 25 to 64 is projected to peak and then start declining by 2052. While the share of the population aged more than 65 is expected to have risen, the shift will be first recorded in the southern states, with nearly 20% of the population in Tamil Nadu and Kerala crossing the age of 60 by 2036. India is not alone in this demographic shift. Most countries are either going through the demographic shift, see such a change in the near future. So, demographic वो rich और वो poor के wages scale के बीच में difference को बोलते क्या? नहीं. Let her complete, then I'll explain. Please read. However, complete. India is among the nations. However, India is among the nations with the lowest share of the elderly receiving pension and the highest share of out-of-the-pocket expenditure in health. This is a double whammy given the poor monetary support and sharp increases in health-related expenses post-retirement by Vignesh Radhakrishnan and Jasmine Nihalani. Okay, ठीक है, very good. क्या है पहले तो जी देखो, you have to remember that what is demographic. What is demo? Demo means ऐसा दिखाना उसके बारे में. Demo means Highlight. Demo means People. Demo means people. Highlight Graphic means measurement. Measurement of population's age. Measurement of population age is known as
डेमोग्राफिक डिविडेंड, सॉरी इज नोन एज डेमोग्राफी। ठीक है, नाउ अगर आप अब आपके घर में कौन कौन है बोलो। In single person's life there are 3 stages. What are those 3 stages? What are 3 stages of life? Childhood, teenage, old age. Child, you will be a 3 stages of life. One, you will be an infant. ठीक है, why you will be a child? ठीक है, you will be a child, you will be adult, and you will Adult, be then old. old. ठीक है, तो इसमें क्या है, क्या चाइल्ड, इफ यू आर ए चाइल्ड कैन यू सपोर्ट योरसेल्फ? No. No, When you are old can you support yourself? no. No, sir. So based on these 3 stages, based on this 3 stages, why I am writing in the comment section, please read that. Based on these 3 stages, population is classified into into 2 types. One is dependent, one is dependent and one is independent. ठीक है, now अब सबसे डिपेंडेंट पॉपुलेशन कौन कौन आते? डिपेंडेंट पॉपुलेशन इंक्लूड Child and old. dependent population includes child and Old. old. Independent population includes Adult. adult. ठीक है, includes adult. ठीक है, whenever the dependent population is very less than, when the dependent population is very less than independent population, then we will have what will have? Diminishing demographic dividend. When the dependent population is very less than independent population, then we will have demographic dividend. समझ में आया? Now if we want me to explain in a graphical wise, this is the population. Are you able to see the screen? Screen दिख रहा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is the population. This is the population. ठीक है, इसमें क्या है, ये क्या है, चिल्ड्रन है, दिस इज चिल्ड्रन, दिस इज एडल्ट, दिस इज ओल्ड. समझ में आ रहा है? There are 3 Yes, parts sir. of population. One is children, one is adult, one is old. अब डेमोग्राफिक डिविडेंड किसको बोलते हैं? ये जो हिस्सा है इट इज वेरी लेस, ये हिस्सा इतना ही है, और ये ओल्ड एज का हिस्सा है दिस मच. मैक्सिमम किसका है? व्हाट इज दिस? एडल्ट. दिस इज एडल्ट. सो दिस इज नोन एज डेमोग्राफिक डिविडेंड. क्यों? ये सबसे ज्यादा इन लोग हम कमा सकते. दिस इज द वर्किंग एज पॉपुलेशन. दिस इज वर्किंग एज पॉपुलेशन. वर्किंग करे तो क्या होता? दिस इज द वर्किंग एज पॉपुलेशन वेयर दिस इज द वर्किंग एज पॉपुलेशन जहां मैक्सिमम अर्निंग होती, उससे क्या होता? अपना जीडीपी बढ़ता, जिससे जीडीपी बढ़ता.
ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं आप डेमोग्राफिक डिविडेंड, माने जितना यंग पॉपुलेशन रहेंगी, जितना वर्किंग एज पॉपुलेशन रहेंगी, उतना ज्यादा लोग कमाते, और उतना ज्यादा लोग उतने उतना ही कितना बढ़ता अपना जीडीपी इंक्रीज होता। समझे? क्लियर? एनी डाउट? द रिच एंड पुअर इज नॉट एट ऑल रिलेटेड हियर। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है अपना, क्या जारा समझ में आया? एज ग्रुप्स पे। ये एज ग्रुप पे है, रिच और पुअर का कुछ भी ताल्लुक नहीं है इससे। जब चिल्ड्रन और ओल्ड एज पॉपुलेशन में कम है और वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, समझ में आ रहा? यस सर। जारा वाज आस्किंग समथिंग। जैनब और जारा कौन पूछ रहे थे? है चले गए? आई थिंक शी इज नॉट देयर। नहीं है डाउट। समझ में आ गया? यस। ओके, जैनब है आप? ओके, समझ में आ गया? सो इन द नेक्स्ट 80 years, 80 साल में इंडिया डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर इज, ये फिर से पढ़िए एक बार, प्लीज रीड दिस, देन यू विल In the next 80 years, India's demographic structure is expected to, with the share of the working population declining and the share of dependent residents increasing. माने देखिए क्या बता रहा है ना, नेक्स्ट 80 years, 80 साल में, अब 8 मिनट जिंदा रहते नहीं रहते वी डू नॉट नो, बट वी आर टॉकिंग अबाउट 80 years, इंडिया डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर माने पॉपुलेशन स्ट्रक्चर बता रहा है, known as population structure is expected to share the working population declining and share of dependent residents increasing। माने क्या हो जाता नेक्स्ट 80 साल में, ये जो वर्किंग है पॉपुलेशन है, इससे पहले क्या देखे थे अपन, ये सबसे ज्यादा था, अब हाँ, ये बढ़ ब्लॉक जाता, कम हो जाती। ये और ये पार्ट, ये ओल्ड एज का पार्ट था और चिल्ड्रन का पार्ट था, ये वर्किंग एज Yes. पॉपुलेशन थी। नेक्स्ट 80 years भाई अब कैसा है, व्हाट इज टुडेस, दिस इज दिस, Today, adult is more, like the working ये हिस्सा group ज्यादा is है, more, but it like, yes, ये 2022 की बात चल रही, लेकिन 80 साल के बाद कितने, क्या कौन सा साल चलते रहता, 2000, और यू माइट गेट 3002. 2100, 2000, 22nd सेंचुरी स्टार्ट हो जाती। तो अपना पॉपुलेशन ये क्या है अपना, इसमें ये ओल्ड एज ज्यादा हो जाता और चिल्ड्रन ज्यादा होता, दैट इज आफ्टर 80 years। समझे? नेक्स्ट, By 2037, the share of Indians aged 25 to 64 is projected to peak and then start declining by 2052, while the share of the population aged more than 65 is expected to have risen. सो ये जो डायग्राम थे क्या एज के ग्रुप के थे, 25 to 64 years। ये जो डायग्राम है आज क्या है, ये क्या है, वर्किंग एज पॉपुलेशन वैप। ठीक है, क्या क्या एज है नॉर्मली, 25 to 64 years। कब तक सबसे पीक में जाता है ये, 2037। आज कौन सी डेट चल रही, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 2022। 2037 माने कितने साल के बाद, 15. 15 years के बाद। ठीक है, नेक्स्ट इज रेट, The shift will be first recorded in the southern states, with nearly 20% of the population in Tamil Nadu and Kerala crossing the age of 60 by 2036. सो शिफ्ट विल बी रिकॉर्डेड फर्स्ट अपने क्या इंडिया में, इन इंडिया वी हैव नॉर्थन इंडिया एंड वी हैव सदर्न इंडिया, राइट? सो ये सबसे पहले जो डिक्लाइन है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड सबसे खत्म होना कब से स्टार्ट होता, किधर है, साउथ इंडिया में स्टार्ट होता है या नॉर्थन इंडिया में स्टार्ट होता? Southern states, South India. साउथ इंडिया, ठीक है। एंड साउथ इंडिया में एक एडवांटेज है, व्हेन यू टेक द नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, देयर इज एन एडवांटेज दैट वी आर मोर लिटरेट।
हम क्या है, पढ़े लिखे थोड़े ज्यादा है और वी हैव अ, क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन और एजुकेशन वाइज वी आर अहेड ऑफ द नॉर्थ इंडिया एंड वी हैव अवर एज भी पहले आती, चांस भी पहले आता और बाहर भी अपन पहले जाते। ठीक है, उसके बाद पढ़िए। India is not alone in this demographic shift. Most countries So, are either going through the ज्योग्राफी, change एक or एक will मिनट, see the change. एक मिनट, ज्योग्राफी पढ़ रहे थे अपन। दिस इज नर्मदा, ये नर्मदा है, उसके नीचे के कितने भी स्टेट्स है ना, उसको बोल रहे सदर्न स्टेट। अगर आप महाराष्ट्र को भी निकाल दो, दिस इज इंडिया। ठीक है, एटलीस्ट फ्रॉम हियर तेलंगाना, एपी, Kerala, Karnataka, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, तमिलनाडु, केरला। So these are the southern states. These are the southern states. Even if you take out Maharashtra, महाराष्ट्र क्या है, थोड़ा सा कभी इधर आता कभी उधर जाता। ठीक है, समझ में आ रहा? तो साउथ इंडिया में कितना पॉपुलेशन रहता? 20% of 20% increase. 20% of population. Nearly. नेक्स्ट प्लीज, पढ़िए उसका How? पेज रीड, However, India among sir, padna sir, yeah, wait. पढ़िए पढ़िए। However, India is among the nations with the lowest share of the elderly receiving pension and the highest share of out-of-the-pocket expenditure in health. This is a double whammy given the poor monetary support and sharp increases in the health-related expenses post-retirement. ना, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर किसको बोल रहे हैं आप? अगर आज के दिन खुदा ना खास्ता किसी की तबीयत खराब हुई, आज के दिन तबीयत खराब हुई, तो कितने जने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जाते? इन टुडे कितने जने क्लास में अपने? देयर आर 14 इंक्लूडिंग मी। ठीक है, कितने जने गवर्नमेंट को जाते, कितने जने प्राइवेट को जाते? अपने पास 14 नंबर्स है, इधर ही सर्वे कर ले सकते। कितने जने प्राइवेट, अगर तबीयत खराब हुई, इफ यू आर, तो कितने जने Private. प्राइवेट को जाएंगे, कितने जने मेडिकल को जाते हैं, गवर्नमेंट जाएंगे? Private. Private. पूरे को पूरे प्राइवेट, कोई भी गवर्नमेंट नहीं। एनीवन गोइंग टू गवर्नमेंट, प्लीज रेज योर हैंड। याजिम, गवर्नमेंट को जाएंगे प्राइवेट को जाएंगे? प्राइवेट प्राइवेट सर। कहीं को प्राइवेट, गवर्नमेंट है ना। Private. Private के डॉक्टर्स अच्छे रहते। तो डर रहे सर गवर्नमेंट वालों से। अब देखो 14:0, ये जो है ना, ये क्या है? प्राइवेट है। ये क्या है? प्राइवेट है। ये क्या है? गवर्नमेंट है। जो भी आप पैसा अपनी हेल्थ के वास्ते प्राइवेट हॉस्पिटल को जाके लगा रहे ना, उसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। आउट ऑफ पॉकेट, इसको क्या बोलते हैं? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। अगर आप प्राइवेट करने गए तो उन्हें कितनी फीस होती, बोलो? कम से कम नहीं बोले तो भी इतने उखड़ते आपको, खाली सर्दी जुकाम हो गए तो भी 1000 उखड़ते नहीं उखड़ते? अगर वही गवर्नमेंट को गए तो 0। लेकिन आप क्या कर रहे? क्वालिटी देख के किधर जा रहे आप? प्राइवेट को जा रहे। तो ये आप ये जो 1000 रुपए जो आप खर्चा कर रहे हैं, इसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये समझ में आया टर्म? व्हाट इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर? यस सर। गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं लेके जो प्राइवेटली आप खर्चा कर रहे हैं अपने हेल्थ पे, उसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन हेल्थ, स्पेशली ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम्स। इट इज वेरी, व्हाट यू कैन से, it's very difficult to
to go for the government. So double whammy or the poor monetary support or the sharp increase in the health related expenses. ठीक है, समझ में आया ये क्या है demographic dividend? Can you write some 50 Yes, sir. words on demographic dividend? Yes, sir. Please write some 50 words on demographic dividend. डिविडेंड माने मुनाफा. डिविडेंड माने व्हाट इज डिविडेंड? मुनाफा. ठीक है, Profit. ग्राफ्स है, ग्राफ्स उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, देन इज मोर देन इनफ. Yes, ठीक sir. है, so by within half a minute our session is going to end. Please make sure that you are relogging. ठीक है, खत्म होते कि फिर रीलॉगिन कर लीजिए. आई विल बी देयर, राइट? Okay, sir.